We are going to complete this chapter, that is chapter 6, Trade and Commerce. And today we will see the main points. First, before starting this lesson, we will see the main points. Teacher, please show me the slides. Okay. I think the first one, yes, that is international trade. So, no country in the world can produce everything it needs for its people. It can grow enough food, it still needs machinery, electronics, and thousands of other things. Trading between countries can be much like buying or selling for a home. Yes, this is what international trade means. I mean, no country is that much of amount of producing anything in that level where they can meet up all their requirements. So they have to um, sell their goods to other countries, and also they have to buy things from other countries, and they sell goods to other countries to fulfill their requirements. So this is it's a sort of exchange of things, and sometimes it can be done with the currency, because currency is the direct source where where a country can easily buy their products. So if we there are certain problems regarding in this channel, so we will see in our next slide that what is the problems that can cause in international trade. Yes, problems in the international trade is the problems which usually happens. The country that may want their goods may not have anything that you want. Yes, they want that, but they don't have that. So each country has its own currency, and the value of this compared with other currencies changes from day to day. Today, this problem is solved by using one currency for international trading, and that is US dollar. Because in US dollar, in all over the world, they have introduced only one currency so that all the tradings can be done with that currency. Otherwise, if they start trading with their own currency, so it is fluctuating every day. Sometimes Pakistani rupee goes down, and the dollar uh, goes up. So it means that these things, the fluctuation of that thing really affect the business of the world. So that's why they introduced only one currency, and the trading is done with one currency, and that is US dollar. And euro is also very known, especially in European Union. Euro is used for their trading, but if we compare it with the euro, but US dollar is more powerful than euro, though the prices are, the currency is very strong. Euro is more stronger than dollar, but still the trading is done with that dollar. So if we can see the next slide, we will see the two currencies that is usually used, that is trading currencies, US dollar and euro. As I have told you that all the world, they only introduce one currency, otherwise there will be a chaos if they start using their own currencies. So because the fluctuation of the currency, so they cannot. So sometimes the trade is direct mean that if you can see in your page number 33, please teacher, you should not open that. आपने अभी पेज नहीं दिखाना. तो अगर आप लोग अपनी बुक्स के पेज में अगर आप देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा पेज नंबर 33 पे कि सऊदी अरेबिया जो है उसको किस तरह यूज़ करता है ट्रेडिंग. टीचर आप ये वही वाला रखिए ज़रा प्लीज़, ज़रा स्लाइड रखें. प्लीज़ शो मी दैट स्लाइड. यस, the next one, the next slide. Yes.
Sometimes the trade is direct. Japan needs oil for its industry but has none of its own. So definitely it's all about that Japan has the modern technology, all the advanced technology, but they don't have oil. So they have to borrow, no, not borrow, they have to purchase oil from Gulf side, especially Saudi Arabia is self-sufficient to produce plenty of oil, but does not have industrial base. So definitely they have to buy new modern machinery from Japan. So that is when they sell oil to Japan, so Japan sell their machinery to South Asia. So in this way, the both countries do their work. These two countries exchange goods with cash. So definitely both countries are very much strong. So they use cash to change their to exchange their goods. ठीक है, sometimes the trading is bit more complicated as shown on पेज 33। अब अगर हम पेज नंबर 33 पे देखें, टीचर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज दिखाइएगा। द बुक पेजेस। हाँ जी। द कमोडिटीज वी बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज आर कॉल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड। ये मेरा ख्याल है आपने एमसीक्यूज बुक के पेजेस नहीं है इसमें। अच्छा, चले एनीवे, अभी आप लोग प्लीज अपनी बुक देखें। बुक में आप टीचर भी ये रहने दें, अभी ये मैं इनको एंड में करवाऊंगी। अच्छा, अभी आप हम बुक को देख लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग इट नीड्स फॉर its people, even if it can grow enough food, and there are only 5 countries on earth that can do that। ठीक है। अब देखें ये 5 कंट्रीज हैं जो कि ये कर सकती हैं। इट स्टिल नीड्स मशीनरी, ऑयल, मोटर व्हीकल्स, रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर थिंग्स। ट्रेडिंग बिटवीन कंट्रीज कैन बी मच लाइक बाइंग और सेलिंग फॉर होम। अब वो कौन सी कंट्रीज हैं जो करती हैं? उनमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यूके आ जाता है, सऊदी अरेबिया आ जाता है, जापान आ जाता है। सो दीज आर द कंट्रीज जो कि ट्रेडिंग आपस में कर रहे हैं। ठीक है। और अभी हम इसको यूं देखते हैं कि समटाइम्स इन अ मार्केट यू मे बार्गेन, बट इन अ शॉप यू यूजुअली नो द प्राइसेस एंड पे। अब देखिए, स्पेशली जब हम ओपन मार्केट में निकलते हैं, इफ़ यू कैन सी इन पेज नंबर 32 द नेगेटिव बैलेंस व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड्स इनकम। ठीक है। अब क्या होता है कि जिस वक्त आप ओपन मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर आप जो है बार्गेन करते हैं, लेकिन जब आप किसी शॉप में जाते हैं या एक स्पेसिफिकली एक जगह पर जाते हैं, you know the prices of that thing, so you don't bargain over there। The country that may want your goods may not have anything that you want, so you cannot barter or exchange। Barter mean, so you cannot आप उनके साथ वो नहीं कर सकते, यानी जब तक आप सेलिंग नहीं करते, परचेजिंग नहीं करते, यानी ये नहीं हो सकता कि आप उसको एक्सचेंज करें या कुछ इस तरह करें। सो आप वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। द कंट्री therefore has to buy in cash, and this presents problems। Buying at home, you use the same currency in Pakistan, rupees, of course। In worldwide trading, each country has its own currency, and the value of this compared with other currencies changes from day to day, often from hour to hour। Today, this problem is solved by agreeing to use one currency for international trading, the most common being the US डॉलर। जी, मैंने जिस तरह भी आपको बताया था कि US डॉलर जो है, अब सारी दुनिया की जो करेंसी है, वो जो बिजनेस है वो US डॉलर में होता है, बिकॉज US डॉलर इज़ द मोस्ट क्या कहना चाहिए, ऑथेंटिक, जिसकी ऑथेंटिसिटी को माना जाता है, और उसी के थ्रू ही सारे बिजनेसेस जो हैं उनको किया जाता है। समटाइम्स द ट्रेड इज़ डायरेक्ट। जापान नीड्स ऑयल फॉर इट्स इंडस्ट्रीज बट इट हैज़ नन ऑफ इट्स ओन। इन द सेम वे, अगर हम सऊदी अरेबिया देखें तो उसके पास इट हैज़ प्लेंटी ऑफ ऑयल, its industries, but has none of its but does not have an industrial base producing heavy machinery, motor cars, and electronic goods। The obvious answer for these two countries is to exchange
goods, ठीक है, विद कैश इफ द टू डू नॉट बैलेंस। अब देखें इसमें आपने फिगर देखें कि अब क्या हो रहा है कि सऊदी अरेबिया जापान को ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है और वहाँ से वो इंपोर्ट कर रहा है मशीनरी, ताकि वो अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज को इंस्टॉल कर सकें। एंड इन द सेम वे जापान हैज़ सो मैनी इंडस्ट्रीज बट डज नॉट हैव oil, so Japan export oil from Saudi Arabia so that their industries can be flourished. अच्छा, अब sometimes the trading is a bit more complicated, ठीक है, जिस तरह के as shown in the drawing below that Saudi Arabia, अब ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, वो अपनी चीज़ें मशीनरी बेचता है यूके को, यूके आगे बेचता है सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया आगे से फिर ऑस्ट्रेलिया, यानी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब कैश के ऊपर ये बात होती है। अब हम ये मैं अब आपको सैंपल, अब हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, ठीक है, हम इसको ये देखते हैं सैंपल एमसीक्यूज अब हम करेंगे। देखें ये सैंपल मैंने क्यों लिखा है कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही वाले एमसीक्यूज आएंगे, आपको आपने ये पूरा पूरा पढ़ना है और कहीं से भी आपको ये आ सकते हैं सैंपल एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो अब हम इसको देख लेते हैं वन बाय वन। आप देखें ज़रा, नंबर वन देखिएगा। टीचर ज़रा इसको मूव कीजिए। नंबर वन, नेक्स्ट स्लाइड। यस, द कमोडिटीज बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज आर कॉल्ड, ये अब आप मुझे जल्दी से उसमें मुझे लिख के बताएं। द कमोडिटीज वी बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज आर कॉल्ड, नो, जो हम बाय करते हैं जायरा, इंपोर्ट, यस, हम इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्टेड चीज़ें जो हम बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कमो जो हम सेल करते हैं, ठीक है, द थिंग्स वी बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज इज इम्पोर्ट, और जो हम अपनी चीज़ें वी सेल आर कंट्रीज टू अदर, जो हम अपनी चीज़ें सेल करते हैं अदर कंट्रीज, वो एक्सपोर्ट है। जो कमोडिटीज़ हम या अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को भेजते हैं वो एक्सपोर्ट है, और जो हम चीज़ें वहाँ से मंगवाते हैं वो इंपोर्ट होता है। तो हम वी बाय कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ इम्पोर्ट, ठीक है, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज, दैट इज़ काइंड ऑफ योर लिटिल क्विज टाइप, आप समझ लें कि जो चीज़ें भी हम दूसरी कंट्रीज से हम वो कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो दैट इज़ इम्पोर्ट, ठीक है। अगर हम अपनी चीज़ें अगर हम उनको बेचेंगे ना, तो दैट इज़ एक्सपोर्ट, ठीक है। आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस। तो टीचर्स नेक्स्ट वाला प्लीज़ दिखाइएगा। हाँ जी, अच्छा, अब आप देखें जी, इंपोर्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद है नहीं, सेकंड वाला टीचर, सेकंड वाला, सेकंड, आपने वो थर्ड वाला कर दिया जी। सेकंड देखें, द प्रोडक्ट्स वी सेल टू अदर कंट्रीज आर कॉल्ड, द प्रोडक्ट्स वी सेल टू अदर कंट्रीज आर कॉल्ड, जल्दी से बताएं, एक्सपोर्ट। वेरी गुड जायरा, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ नंबर थ्री, what is number three? The products, the products we sell to other हाँ जी, the wealth of a country, the wealth of a country comes largely from its, किससे आती है? The wealth of a country comes largely from its, किससे आती है? एक्सपोर्ट से आती है ना। मुल्क में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, जब आप अपनी चीज़ें दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके पास मुल्क में आती है ना, वेल्थ आती है, ठीक है। बट इफ़ यू डोंट एक्सपोर्ट, सो यू डोंट गेट इनफ, यस, एक्सपोर्ट, यस,
उसके बाद नंबर 4, टीचर नंबर 4 जरा कीजिए। द वैल्यू, जी, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, अब इसको ज़रा समझ के मुझे रिप्लाई करें। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स सेट अगेंस्ट वन अनदर is called the balance of dash. Very good, Zakriya. Payments. Very good. Very good. Payments. Christopher. Good. Very good. चलें जी, अब हम नेक्स्ट वाला ज़रा देखते हैं। नेक्स्ट अब देखें, when expenses exceeds um, when expenses exceed income, it is called dash of payments. Negative or positive? Negative. Yes, Zakriya, very good. Negative. Negative. ठीक है, अब आप लोगों को ये अपने माइंड में अब रखने, अब इसी तरह के ही आपको ये आएंगे क्वेश्चन भी, तो आपने उसके लिए अपने आप को वो रखना है, प्रिपेयर रखना है। ठीक है, अभी इसके बाद अब हम बुक के क्वेश्चन आंसर्स, टीचर नेक्स्ट, अच्छा ये यहाँ पर पेजेस लगे हुए हैं। चलें ठीक है, अब हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाते हैं टीचर। यस, वाई इज, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग देखें तो देखें, वाई इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बैलेंस इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। It is important for a country to balance its exports and imports, because if a country imports more than its exports, it has to borrow from international organizations like the World Bank and will then have to repay the loan with high interest. This means it will have less to spend on services such as schools, hospitals, law and order, roads, etc. Okay? The next question is, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक्टिविटी वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड आउट एंड लिस्ट द रॉ मटेरियल्स दैट पाकिस्तान इंपोर्ट्स फॉर इट्स इंडस्ट्रीज, ऑल्सो लिस्ट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेड from abroad into Pakistan. Some important raw materials are petroleum and petroleum products, plastics, fertilizers, chemicals, synthetic yarn, wheat, soybean, and palm oils, iron and steel. Some imported finished products are power generating and mining machinery, textile, agricultural and electrical machinery, electronic appliances and apparatus, petroleum products, transport vehicle and equipment including aircraft, paper, electronic and electrical equipment. So these are the things that raw materials that Pakistan imports for its industries. ठीक है ना, and also finished products that are imported फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो अब्रॉड से किया जाता है। ठीक है, अब नंबर 4 हम देखेंगे, ये एक जर्नल क्वेश्चन है। नंबर 4 अगर हम देखें कि हाउ हैव पाकिस्तान वर्किंग अब्रॉड हेल्प द इकोनॉमी। Pakistanis working abroad earn higher wages than what they can earn here in Pakistan. They send, यहाँ पे ये एंड नहीं है बल्कि सेंड है। प्लीज़ इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा जब ये आपके पास नोट्स आएंगे, तो टीचर काइंडली अगर आप इसमें ना एस पुट कर दीजिएगा, सेंड होम मनी एंड दस हेल्प द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर। सैम्पल क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। सो थैंक यू सो वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, नाउ आवर लेसन इज ओवर। Yes, so this is the worksheet which teacher has showed you. तो अभी आपने ये worksheet जो